कैश फॉर कावेरी मामले में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस संबंध में लोकसभा से प्रस्ताव पारित हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दी। इस कार्यवाही का विरोध कर रहे सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया। महुआ मोइत्रा के समर्थन में तमाम विपक्षी सांसद सदन भवन के बाहर आए। इसमें सोनिया गांधी भी शामिल थी। इससे पहले लोकसभा की एथिक कमेटी की रिपोर्ट पर आधे घंटे से अधिक चर्चा हुई। इस दौरान स्पीकर ओम प्रकाश बिरला ने मोइत्रा को बोलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मोइत्रा कमेटी के सामने अपनी बात रख चुकी हैं। वहीं विपक्षी सांसदों ने मोइत्रा को बोलने देने की मांग की। आपको बताते हैं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद क्या कहा। Since I was not allowed to speak inside Parliament, I am using this opportunity to speak outside Parliament. I thank all my colleagues as part of the India Alliance. I thank my party, everybody for standing by me. The 17th Lok Sabha has indeed been historic. It is a house which saw the passage of the Women's Reservation Rescheduling Bill, but it has presided over the most tenacious witch hunt of one of 78 women MPs, a first-timer, a single woman with no political lineage, elected from a far-flung constituency on the Bangladesh border. This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to tokdo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you're finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted, and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me. They are at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It is no evidence of any cash, of any gifts, anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken.
Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bango. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. Used every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of it. So thank you very much. Oh, well done. टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता बीते दिनों रद्द हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपने पार्टनर को लेकर नाराजगी दिखाई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, तो शिकायतकर्ताओं में से एक मेरा पूर्व प्रेमी था जो गलत इरादे से आचार समिति के सामने आम नागरिक के रूप में पेश हुआ। बता दें कि महुआ मोइत्रा वकील जय आनंद देहाद्राही के साथ कभी रिश्ते में थी और बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था। जय आनंद देहाद्राही से प्राप्त हुए पत्र के आधार पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। पत्र के हवाले से दावा किया गया है कि महुआ मोइत्रा और रियल एस्टेट समूह हीरा नंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरा नंदानी के बीच रुपए के आदान प्रदान के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि महुआ ने आरोप से इनकार किया था। लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान उदाहरणों का हवाला देते हुए महुआ मोइत्रा को बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। निष्कासन के बाद महुआ मोइत्रा ने मीडिया से बात करते हुए वो भाषण पढ़ा जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उसे सदन के पटल पर रखा जाना था। उस दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई नेता मौके पर मौजूद थे। उसी दौरान महुआ मोइत्रा ने अपनी बात कहते हुए अपने पूर्व प्रेमी का भी जिक्र किया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक महुआ मोइत्रा ने कहा कि दो शिकायतकर्ताओं में से एक उनका अलग हुआ पार्टनर था जिसने गलत इरादे से एथिक्स पैनल के सामने एक आम नागरिक का मुखौटा लगाया हुआ था। मोइत्रा ने कहा, निष्कर्ष पूरी तरह से दो निजी नागरिकों की लिखित गवाही पर आधारित है जिनके वर्जन भौतिक दृष्टि से एक दूसरे के विरोधाभासी है, जिसमें से किसी से भी मुझे जिरह करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा, उन पर कार्रवाई के लिए जिन दो गवाहियों का इस्तेमाल किया गया वे बिल्कुल विपरीत है। महुआ मोइत्रा ने आगे कहा, शिकायतकर्ता का कहना है कि मैंने एक व्यापारी के व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछने के लिए उनसे नकद और विमर्श स्वीकार किया, लेकिन व्यवसायी के स्वयं संज्ञान वाले हल्फनामे में कहा गया है कि मैंने मेरे एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उस पर सवाल अपलोड करने के लिए दबाव डाला। मोइत्रा ने कहा, एथिक्स पैनल मुद्दे की जड़ तक नहीं गया और इनके खिलाफ आरोप लगाने वाले व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी को समन नहीं भेजा। निष्कासन की सिफारिश केवल इस आधार पर हुई कि मैंने अपना लोकसभा लॉगिन क्रेडेंशियल साझा किया। लॉगिन साझा करें या नहीं, इसे नियंत्रित करने के लिए कोई भी नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि एथिक्स कमेटी की सुनवाई से पता चलता है कि हम भी सांसद नागरिकों जनता से सवाल पूछने और संसद में आवाज उठाने के लिए कन्वेयर बेल्ट